जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 12। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जयाध्योग मात्मा विशुद्धये। और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। फिर उस स्थान पर बैठकर चित्त को एकाग्र करना चाहिए और सद्गुरु का स्मरण करना चाहिए। फिर अंदर और बाहर दोनों ओर सात्विक वृत्ति से ओतप्रोत होकर बहुत सम्मान और आदर पूर्वक तब तक सद्गुरु का स्मरण करते रहना चाहिए जब तक अहंकार की कठोरता बिल्कुल नष्ट न हो जाए और मन एकाग्र होकर हृदय में प्रतिबिंबित न हो जाए और इस प्रकार की स्वाभाविक एकता की अवस्था पूरी तरह से प्राप्त न हो जाए। फिर इसी आत्मबोध वाली अवस्था में आसन पर बैठे रहना चाहिए। ऐसी अवस्था में यह अनुभव होने लगेगा कि शरीर आपसे आप संभलता हुआ ठिकाने आ रहा है और शरीर की वायु एक ही स्थान पर एकत्र हो रही है। इस अवस्था में बैठते ही प्रवृत्ति परामुखी हो जाती है। चित्त की समाधि अर्थात एकाग्र समस्थिति समीप आ जाती है और योगाभ्यास का साधन स्वतः ही बन जाता है। There having made the mind one-pointed, with the actions of the mind and the senses controlled, let him, seated on the asana, practice yoga for the purification of the self. If you want to retire into solitude for the practice of meditation, and if you are a householder, grahast, with a thirst for intense spiritual practice, sadhana, you cannot all of a sudden savor your connection with your family. Sudden severance of worldly ties may produce intense mental agony in you and shock in them. If you have the senses under your full control, you can find perfect solitude and peace even in the most crowded and noisy place of a big city. However, if senses are turbulent, if you have not got the power to withdraw them, you will have no peace of mind even in a solitary cave of the Himalayas. Make the mind one-pointed by collecting all its dissipated rays by the practice of yoga at the heart center. During the practice of concentration, remember your Sadguru Deva with immense love and devotion. Remember Sadguru Deva with complete surrender and utmost devotion till the mind becomes devoid of all worldly and materialistic thoughts and peace dawns on mind and heart. The sadhak experiences not only peace but enjoys spiritual bliss, immense atmic anand, and his ego starts merging in the reality. Due to pressure of the pran vayu, air-like vibrations are felt at the heart centers. When a beginner sits for meditation and deliberately attempts to forget the worldly objects, all sorts of worldly thoughts will crop up in the mind and disturb his meditation. He will be surprised to experience that old thoughts that he entertained several years ago and old memories of past enjoyments will bubble up and force the mind to wander in all directions. He will notice that the trap door of the vast
subconscious mind is opened, and the lid of the storehouse of thoughts within is lifted up, and the thoughts gush out in a continuous stream. The more he tries to still them, the more they bubble up with redoubled force and strength. Sadhak should not be discouraged and should never despair. Through regular and constant meditation, he can purify the subconscious mind and its constant memories. The fire of meditation will burn all thoughts. Meditation is a potent antidote to annihilate the poisonous worldly thoughts. Be assured of this. Concentration of the Lord and Satguru Dev will act like a dynamite and blow up all thoughts and memories in subconscious mind. If the thoughts trouble you much, do not try to suppress them by force. Be a silent witness. They will subside gradually. Then try to root them out by affectionately persuading your mind through regular silent meditation. You can mold the mind properly and direct the thoughts and the mental energy in the divine channel. Calm the bubbling emotions, sentiments, instincts, and impulses gradually through silent meditation. You can give a new orientation to your feelings by gradual and systematic practice. You can entirely transmute your worldly nature into divine nature. You can exercise supreme control over the nerve centers, muscles, the 5 sheaths of the self, Atman. This is stupendous task indeed. But for a real sadhak of determination, who has the grace of the Lord and the Satguru and iron will, it is not at all difficult. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 6, श्लोक 12. आणि मग त्या आसनावर बसून मन एकाग्र करून मन आणि इंद्रियांच्या क्रियाकलापावर नियंत्रण ठेवून विवेकाच्या शुद्धीकरणासाठी योगाचा अभ्यास कर. त्या ठिकाणी बसून मन एकाग्र करावे आणि सद्गुरूंचे स्मरण करावे. त्यानंतर अंतर्गत आणि बाह्य दोन्ही सात्विक वृत्तीने ओतप्रोत होऊन अहंकाराची कठोरता पूर्णपणे नष्ट होईपर्यंत आणि मन एकाग्र होऊन हृदयात प्रतिबिंबित होईपर्यंत आणि नैसर्गिक एकतेची अशी स्थिती पूर्णपणे प्राप्त होईपर्यंत सद्गुरूंचे मोठ्या आदराने आणि मनापासून स्मरण करत राहावे. मग आत्मसाक्षात्काराच्या या अवस्थेत आसनावर बसून राहावे. अशा स्थितीत तुम्हाला तुमचे शरीर स्वतःहून जागेवर स्थिरावताना आणि तुमच्या शरीरातील प्राणवायू एकाच ठिकाणी एकाग्र होताना जाणवू लागेल. या अवस्थेत बसताच तुमची अंतःप्रेरणा बदलते. तुमचे मन अधिक केंद्रित होते आणि एकाग्रतेची समता समाधी येते आणि योगाभ्यास ध्येय गाठण्याचे एक साधन बनतो. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరమ సంత్ మహాత్మా సురేష్ బాలజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకం 12. తత్రైకాగ్రం మన కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్వాసనే యుజ్ఞోద్యోగమాత్మ విశుద్ధయే. మరియు ఆసనం పైన కూర్చుని మనసును ఏకాగ్రం చేసి చిత్తము మరియు ఇంద్రియముల క్రియలను వశం గావించుకొని అంతఃకరణ శుద్ధికై యోగాభ్యాసమును చేయాలి. ఆ ఆసనంపై కూర్చుని చిత్తమును ఏకాగ్రపరచాలి. సద్గురుని స్మరించాలి. పిమ్మట లోపల బయట 2 వైపులా సాత్విక వృత్తిని నింపుకొని ఎంతో గౌరవ మర్యాదలతో అహంకార కాఠిన్యత పూర్తిగా నశించేంత వరకు మనసు ఏకాగ్రము చెంది హృదయంలో ప్రతిబింబించేంత వరకు ఈ విధమైన స్వాభావిక స్థితి పూర్తిగా లభించేంత వరకు సద్గురువుని స్మరిస్తూ ఉండాలి. పిమ్మట అదే ఆత్మజ్ఞాన అవస్థలో ఆసనంపై కూర్చోవాలి. ఇటువంటి స్థితిలో
శరీరము తనంతట తానే సంభాళించుకుంటూ గమ్యానికి చేరువవుతున్నట్లు మరియు శరీరమందలి వాయువులన్నీ ఒకే స్థానమందు ఏకత్రిక మగుచున్నట్లు అనుభవం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ స్థితిలో కూర్చున్నంతనే ప్రవృత్తి అంతా పరాన్ముఖం అవుతుంది. చిత్త సమాధి అనగా ఏకాగ్రమైన సమస్థితి చేరువవుతుంది మరియు యోగాభ్యాస సాధన దానంతటదే జరుగుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై പ്രസരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം, അധ്യായം 6, ശ്ലോകം 12. നേരത്തെ വിവരിച്ചതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയ ഇരിപ്പിടത്തിലിരുന്ന് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി മനസ്സിൻ്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ കീഴടക്കി ബോധത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി യോഗ പരിശീലിക്കണം. ഒരാൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി സദ്ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കണം. പിന്നെ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും സ്വാത്വിക സഹജാവബോധം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം പൂർണ്ണമായി നശിച്ച് മനസ്സ് ഏകാഗ്രമായി ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് വരെ, സ്വാഭാവിക ഐക്യത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും കൈവരിക്കുന്നത് വരെ വളരെ ആദരവോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി സദ്ഗുരുവിനെ സ്മരിക്കുന്നത് തുടരണം. അത്തരമൊരു ആത്മസാക്ഷാത്കാര അവസ്ഥയിൽ ശരീരം വിശ്രമിക്കുന്നതായും ശരീരത്തിലെ വായു ഒരിടത്ത് കൂടുന്നതായും അനുഭവപ്പെടും. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സഹജാവബോധം അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. മനസ്സ് സമാധിയിലേക്ക്, അതായത് ഏകാഗ്രമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ യാന്ത്രികമായി മാറുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. തത്രൈകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യच्चित्तेन्द्रिय अक्रियः उपविश्यासने युञ्ज याद्योगमात्म विशुद्धये. ओई आसन पर बैस कर मौन के एकाग्र क चित्त आ इंद्रिय सबके क्रिया सबके अपना अधीन क अंतःकरण के शुद्धि लेल योग अभ्यास कयल जाय. फिर ओई स्थान पर बैस कर चित्त के एकाग्र करबाक चाही आ सद्गुरु के स्मरण करबाक चाही. तखन भीतर आ बाहर दुनू दिस सात्विक वृत्ति सँ ओत प्रोत भ क बड़ मान आ आदर सँ ता धरि सद्गुरु के स्मरण करैत रहबाक चाही जा धरि अहंकार के कठोरता पूर्ण रूपे नष्ट नहीं भ जाय आ मौन एकाग्र भ क हृदय में प्रतिबिंबित नहीं भ जाय आ एहि तरहे स्वाभाविक एकता के अवस्था नीक जकाँ प्राप्त नहीं भ जाय. तखन एहि आत्मबोध वाला अवस्था में आसन पर बैसल रहबाक चाही. एहन अवस्था में एहन अनुभव हुअ लगैत अछि जे शरीर अपने आप सम्हरि गेल अछि आ शरीर के वायु एक्के स्थान पर एकत्र भ रहल अछि. एहि अवस्था में बैसते देरी प्रवृत्ति परांगमुखी भ जाइत अछि. चित्त के समाधि माने एकाग्र सम स्थिति लग आबि जाइत अछि आ योगाभ्यास के साधन अपने आप बनि जाइत अछि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.